So welcome to our Infinity classes. In this video, we are going to learn inductive approach. The method is one of the most important method of teaching in science and mathematics. Not only in science and mathematics, you can adopt this method in English, in language also. So let us start here inductive approach first. Inductive approach. Inductive approach is advocated by Pestalozzi and Francis Bacon in the year 1620. So this method was given by Pestalozzi and Francis Bacon here. Pestalozzi and Francis Bacon. तो टी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि who given this inductive method means Pestalozzi and Francis Bacon in the year 1620. Remember this one. And after the inductive approach is based on the induction. It is totally induction. It is depends on the what? Based on the what? Induction. Induction is the process of proving a universal truth. इंडक्शन का मतलब क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्रूविंग ए यूनिवर्सल ट्रुथ. जो सच है उसको प्रूव करना है. ए थ्योरम बाय शोइंग दैट इफ इट इज ट्रू ऑफ any particular case, it is next true for further also cases in the same serial order. Hence the true for any such cases. See here, induction is the process of, induction क्या है? एक प्रोसेस है. It is a process of, induction is a what? Process of proving a universal truth or a theorem. So with the help of induction, we are proving a universal truth or a theorem by showing that if it is true for any particular case, अगर एक statement particular case में true है तो it is also further true for next case in the same serial order. Same serial order में next cases में क्या होता है? True होता है, and hence true for any such cases. Thus, this method is arriving at a formula. This method, by doing this, we will arrive at a formula or a rule by observing a sufficient number of particular cases, instances or cases we can say. So in this method, we are proving the what? Universal truth, that is induction. Induction is nothing but we are proving the universal truth, or you are proving the what? Theorem. For if it is true for one statement any particular case, then it is also true for next cases also in the same serial order करके. यानी कि एक केस में अगर प्रूव रहा है तो नेक्स्ट आगे के सीरियल आगे भी क्या है? पर्टिकुलर केस में सीरियल ऑर्डर में प्रूव होते जाता है, ट्रू होते जाता है. सच केसेस, फॉर एनी सच केसेस. Thus it is a method of arriving at a formula. ये मेथड है, ये हमें फॉर्मूला पे अराइव होते हैं. यानी we will establish or derive the formula or a rule by observing a sufficient number of particular cases, instances. Particular instant या sufficient case के बाद में we will arrive at one formula or a rule we can say. If one rule is applies to a particular case and it is equally applicable to different similar cases. अगर एक केस को अप्लाई होगा particular rule तो that particular rule is applicable to the different similar cases we can say. It is accepted as a general rule or formula. So we are accepting this one. जो भी रूल होता है we are accepting it is a rule or formula as a generally. Therefore inductive approach proceeds from. So inductive approach में किस तरह से proceed होते हैं हम? Particular to general. So first of all we are moving with the what? Particular examples, then we will derive the what? General rule or formula we can say. Concrete to abstract. Concrete means what? That thing which is visible, that is पहले concrete के चीजों को दिखा कर कहाँ पर जाते हैं? इमेजिनेशन, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट, जो चीज हमें नहीं दिखाई देती आंखों. कंक्रीट का मतलब जो हमारे आंखों को विजिबल है. अब्स्ट्रैक्ट का मतलब दैट इज नॉट विजिबल थिंग. नोन टू अननोन मीन्स फर्स्ट जो हमको मालूम है उससे हम स्टार्ट करते हैं. अननोन यानी कि जो हमको मालूम नहीं है उसे हम प्रूफ करते हैं या फाइंड आउट करते हैं. सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. फर्स्ट सिंपल यानी कि इजी सी डिफिकल्ट, और सिंपल टू डिफिकल्ट वी विल प्रोसीड हियर. फ्रॉम एग्जाम्पल्स टू प्रिंसिपल और रूल टू formula, rule or formula. From example, first we will discuss the example, then we will go to the you proceed to what? Principle or rule or formula. In this manner we are proceeding at the time of adopting this method to teach science or maths, that is inductive method. So remember these are very important for the point of whatever MCQs in the TET. Particular to general, concrete to abstract, known to unknown, simple to complex, from example to principle or rule to formula. This method has been found to be very suitable for teaching of mathematics because many mathematical formula and generalizations are the result of the induction. So totally this method is what very suitable or very helpful for teaching mathematics because
maximum formula and generalizations are the result based on the what this method only, that is inductive method. So that is nothing but the induction we can, that we are proving a universal truth. So we have a number of here we have in this method steps. So first of all, see the steps in inductive method. Yes, first, number one, selection of number of cases. Selection of number of cases in the inductive method. The teacher does not begin with a rule. See here, selection of the teacher does not begin with a rule. Here the teacher will not start the teaching with the what rule. यहाँ पर teacher जो अपनी teaching है rule से start नहीं करते. Instead the teacher first select the several suitable, concrete or simple examples. So first teacher will select the what suitable, concrete or simple examples which represents the concept. जो concept को represent करते हैं, जो concept हम पढ़ाने जा रहे हैं उस concept के related हम suitable teacher क्या करता है, suitable, concrete यानी कि जो दिखाई देते हैं और simple exams को लेकर concept को explain करना start करते हैं. Then examples must be varied, accurate and एज अप्रोप्रिएट. सो एग्जाम्पल मस्ट बी वेरिड, अलग अलग रहना चाहिए, एक्यूरेट रहना चाहिए और अकॉर्डिंग टू द एज. एज अप्रोप्रिएट मीन्स एज लेवल ऑफ द स्टूडेंट. दे शुड हेल्प द स्टूडेंट नोटिस द सिमिलरिटीज और पैटर्न्स. सो एग्जाम्पल क्या है, हेल्प करना है किसको, बच्चों को, टू नोटिस द सिमिलरिटीज और पैटर्न्स इन द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के अंदर सिमिलरिटीज क्या है और पैटर्न क्या है, दैट मस्ट बी वॉट नोटिसेबल बाय द स्टूडेंट, दैट इज ऑब्जर्वेबल. बच्चे ऑब्जर्व करना क्या एग्जाम्पल में सिमिलैरिटीज हैं, क्या पैटर्न है एग्जाम्पल के अंदर. यस, नो एग्जाम्पल फर्स्ट इन दिस स्टेप. The teacher while adopting this method, how the teacher is being to teach the rule, sum of the two odd number is even. The teacher selects the what first, 3 is an odd number and 5 is an odd number. 3 plus 5, it use what, 8. Yes, again he will take another example, that is 7 plus 9. 7 plus 9 is equal to how much, 16. So again third example, 11 plus 13. 11 plus 13 is what, 24. So these are, see here, observe here, in all the cases sum of the two odd numbers, sum of the two odd number is what, always even, we can say. So this is the what, the number of cases first teacher will explain. So here the student will find out the pattern or similarities between the sum of the two odd number is what, always an even number. So that the rule will be derived by the what, the student after seeing the what, number of cases and particular examples. Then observation of the case under the given condition. Student now observe the each example closely. जिससे कि student example को closely observe करता है. The teacher guides them to check the values. The teacher will guide them, check the values, perform the operations, addition or whatever it may be the operation, then note the results, then compare the what, outcome. So teacher will guide the student, check the values and perform the operations and note the result and compare the outcome. This step develop the analytical thinking. By doing this, that these steps develops the what, analytical thinking among the what, students. बच्चों में analytical thinking होती है. Analytic means separating the things among the students. And close observation skills among the student. Observation skill भी develop करता है, analytical thinking भी develop होती है बच्चों में. By doing this, student observe here, 3 plus 5 is what, 8, 7 plus 9 is what, 16, 11 plus 13 is what, 24. They note that the result is always even here. The student will note, student will observe the pattern and add means what, they are performing the operation and noting the result. 3 plus 5 is 8, 7 plus 9 is what, 16, 11 plus 13 is what, 24. They note that the result is always even. The result is always what here, even. So this is the what, second step. Now third step, investigation and analysis for the common properties and analysis. The student starts to investigate the pattern in the example. So investigation and analysis. So third step is what, investigation and analysis for the common properties and analysis. Here students starts investigating the pattern in the example. Student will start investigating what they are analyzing here. See here, what is the common in starting number, what is the common in the result, why does this happen. This step builds the what, logical reasoning among the students. This step develops the what, logical reasoning among the students.
and conceptual understanding and clarity. It also develops the what conceptual understanding and clarity also. Yes. So this is the what, that is analysis, investigation and analysis for common properties step. That is third step. Examples see here. Student analyze all the starting numbers are what here odd. That is 3 plus 5, 7 plus 11. So all the starting number is odd number. And after that all results are what even. And odd plus odd always gives a number that ends with the what 0, 2, 4, 6 or 8. That are what all are even numbers. All are even numbers. Finding the common relations. Next, in the fourth step, finding the common relation. Now the student discover the relationship between the examples. In this step, ये step में बच्चे teacher students क्या करते हैं पर common relationship, they discover the what relationship between the examples. This is where they connect the pattern in input, the pattern in output. Input क्या था, what is the output is we are arriving. They start expressing the rule informally in their own words. बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, start करते हैं informally to express the rule. What is the rule behind this one? That after finding the common relation. Example, student identify the relation. So what is the relation? When we add the two odd numbers, the answer is what always even. So the relation between these two odd number and sum is what always even. They will come to the what, they will identify the common relation. This relation or pattern found from the what with the help of example. ये example के जरिए से मालूम पड़ता है अपना pattern और relation क्या है बोल के. Lastly, that is fifth step, arriving at generalization. Finally, the teacher helps the student write a formula or rule or general statement. So after the fourth step, finally the teacher helps the student write a formula or a rule or general statement. The teacher will help the student for writing the formula or rule or general statement based on their what observation. After observing the what number of cases, this generalization is valid for all the cases. And remember, it is very important, after observation the generalization is what valid for all the cases, not just the example seen. Example, generalization is what here, the sum of any two odd numbers is always what even number. That is the generalization. This is the final rule derived through the what inductive reasoning. This is the final rule derived through the what inductive reasoning. Inductive method examples, see the examples of this method. Sum of the angles of a triangle is equal to what 180. Sum of the angles of a triangle is what 180. Here in this, students start with the what first step. Yes, what is the first step? Selection of number of cases, choosing the example. So teacher selects the different type of the triangles, that is case 1 scalene triangle, isosceles triangle, right angle triangle. In each triangle must have the angles measured. So we have to measure the what after taking the three triangles, scalene triangle, isosceles triangle and right triangle. Each triangle must have the angles measured. That is step 2, observation of cases under the given condition. Student measures each angle. First हम बच्चों को 3 triangle देते हैं, scalene triangle, isosceles triangle and right triangle, and then tell them to measure the angles. बच्चों को बोलना है कि measure करो angle क्या है ये triangles के. Student measures each angle in all the 3 angles using a protractor. With the help of protractor, student will measure the what each angle of all the triangles. Case 1, in scalene triangle the angles are found to be what 40 degree, 70 degree and 70 degree. In isosceles triangle 50 degree, 50 degree and 80 degree. In third case right triangle 30 degree, 60 degree, 90 degree. Student note the values. After measuring the angle, student note the what? They will note these angles. Note these angles. Then third step, moving to the what third step, that is investigation and analysis of what? For common properties. Investigation and analysis for common properties. Student add the measured angles in each triangle. That is case 1, that is 40 plus 70 plus 70, it gives what 180. In the isosceles case 50 plus 50 plus 80 is what again 180 we will get. In right triangle 30 plus 60 plus 90, again we will get the what 180. Student observe in every case
the sum of the three angle is what? Always equal to 180. So in all the cases, in the case of scalene triangle and isosceles triangle and right triangle, the student will add all the triangles, and in all the cases the student get the what? Same result, that is 180. And student observe in every case carefully here, he will get the what? Always the sum of the triangle, three angles of a triangle is what? 180. Now in the step 4, finding the common relations here. In the step 4, we are finding the common relations. Students try to identify the relationship or pattern. In this step, the students are finding the what? Common relation regardless of the type. So they don't about the border about the what type, regardless of the side and length, regardless of the what? Angle and types. The total of three angle is always what? 180 degree. This is the common relation. So what is the common relation behind this example? The sum of the angles, three angles of a triangle is what? Always 180 degree. Now step 5, arriving at generalization. Arriving at generalization. After the pattern inconsistently observed, student conclude that that is the generalization. The sum of the interior angles of any triangle is what? 180 degree. The sum of the interior angles of any triangle is what? 180 degree. This rule is reached through the what? Observation, analysis and reasoning. So this rule, how the student arrived on this rule? Through the observation and analysis and reasoning. बच्चे observe करते हैं, analyze करते हैं, चीजों को separate करते हैं, and with the help of reasoning, if the help of these three skills, they will arrive to the what? Generalization, that is sum of the interior angles of any triangle is what? Always 180 degree. Another triangle example, exterior angle is equal to what? So here exterior angle is equal to sum of the opposite interior angles. Here step 1, selecting the cases, choose the three triangles, that is acute triangle, obtuse triangle and right triangle. Extend one side in each triangle to form the exterior angle. And observation, measure the angles with the protractors. In the second step, they will measure the what? Angle with the help of protractor. Interior opposite angles are what? 40 and 50. Exterior degree is what? 90 here. And in the triangle 2, opposite angles are what here? 30 and 80, and exterior angle is what? 110. So investigation. I'm moving to the what? Third step, that is investigation. Student compare 40 plus 50 is what? 90 degree, and 30 plus 80 is what? 110 degree. So investigation analysis over. In each case, exterior angle is equal to the what? Sum of the opposite interior angles. Now in the fourth step, finding the relation here, a pattern appears here. Exterior angle is always equal to what? Opposite interior angle 1 plus opposite interior angle 2. So adding these two opposite interior angle, you will get the what? Exterior angle. Generalization. Student generalize after observing the number of cases. In any triangle, the exterior angle is equal to the what? Sum of the two interior opposite angles. So this is all about the what? Inductive method of teaching method. So this method proceed. First, the teacher at the time of teaching, first they do not teach the directly concept in this method. The teacher must begin with the what? First examples, particular examples. From with the help of example, they will derive the what? General rule or formula, and to arrive the what? Concept. This method is known as what? Inductive method. So merits of inductive method here. So learning becomes very meaningful and permanent. By adopting this method, it is a very important method. Learning becomes what? Meaningful and permanent in the mind of the what? Learner. Student learn by observing and doing and discovering. So the concept stay in the mind for a long time. बच्चे क्या करते हैं? खुद hands on, they will observe and do the what, and they will discover the things here. So whatever they have learned the concept here, it will be permanent in the mind of the what? Student for the long time. बच्चे खुद यहाँ पर observe करते हैं, discover करते हैं, so तो जो भी concept है permanent उनके mind में save हो जाता है. Next, it develops the critical thinking and reasoning ability among the student. ये बच्चों में critical thinking as well as reasoning develop करता है. Student compare the example by doing the comparison and finding the pattern, making the generalization. This strength the what? Logical thinking and reasoning we can say. Compare करने का example को compare करना, पैटर्न को फाइंड आउट करना, जनरलाइजेशन को आना, इस तरह से क्या है ये मेथड क्या है बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग को डेवलप करता है. इट प्रमोट्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स द लर्निंग. तो बच्चे this method
Learners are involved in the experiment, observation, and problem solving. It shifts the classroom from teacher centered to the what student centered. So, the classroom क्या है entirely teacher centered जाके है student centered because the students are actively participating and promoting towards the what learning. We can say बच्चे खुद actively interest ली एग्जाम्पल को सॉल्व करते करते चीजों को सीखते हैं. ये टीचर सेंटर्ड से क्या होता है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच हो जाता है. तो इट प्रमोट्स दी व्हाट पॉजिटिव लर्निंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स दी व्हाट लर्निंग. इट बिल्ड्स द सेल्फ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द स्टूडेंट. बच्चों में ये मेथड क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है. स्टूडेंट फील द कॉन्फिडेंट बिकॉज दे डिस्कवर द रूल बाय देमसेल्फ. बच्चे खुद एग्जाम्पल को ऑब्जर्व कर 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 क्या है, दे विल डिस्कवर दी व्हाट रूल्स देमसेल्फ. सो दे फील दी व्हाट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड दे फील ऑन very proud on themselves. Student feel the confident because they discover the rule by themselves instead of memorizing. बच्चे कुछ भी मेमोराइज नहीं करते हैं, अपने आप ही डिस्कवर करते हैं रूल. सो डिस्कवर करने के बाद में क्या है, बच्चों में खुद उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है. इट हेल्प्स इन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन. abstract tools becomes easy when the students learn through the what concrete example first. यहाँ जो भी abstract जो हमारे आंखों को दिखाई नहीं देता है, जो हमारे आंखों को दिखाई नहीं देता है, abstract rule, it becomes easy when student learn through the what concrete example. यानी कि जो चीज हमें आंखों को दिखाई देती है, तो जो फॉर एग्जाम्पल concrete example मीन्स what, जो चीज फॉर एग्जाम्पल 5 एप्पल में प्लस 6 एप्पल मिलाए तो कितना होता है कंक्रीट. यानी कि 5 एप्पल दिखाते हैं बच्चों को और 5 छोटे और 6 बड़े एप्पल दिखाते हैं, इसका सम करते हो 11 एप्पल हो जाता है. सो दिस इज द कंक्रीट. कंक्रीट का मतलब क्या है, जो चीज हमको आंखों को दिखाई देती है. अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या, मेरे पास 60 सेब हैं, 60 एप्पल्स हैं, और मान लो कि तुम्हारे पास 120 एप्पल्स हैं जो हमारे घर में हैं, जो दिखाए, इनको दोनों को ऐड करो, 60 + 120 करे कितना होता है 180. दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट, दीज आर दी अब्स्ट्रैक्ट थिंग जो घर में है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे. अब मान लो कि मेरे पास 5 एप्पल हैं जो मैं कैरी कर सकता हूँ, 60 और 120 कैरी नहीं कर सके. दैट इज व्हाट अब्स्ट्रैक्ट रूल वी कैन से. अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स एनकरेजेस द क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट. बच्चों में क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट को पैदा करता है मेथड. स्टूडेंट एंजॉय एक्सप्लोरिंग एंड फाइंडिंग द आंसर. बच्चे एंजॉय करते हैं इस मेथड से बाय एक्सप्लोरिंग द नॉलेज एंड फाइंडिंग द आंसर. सो इट इंक्रीज द मोटिवेशन एंड क्यूरियोसिटी अमॉन्ग द स्टूडेंट्स एंड दे विल एक्टिवली पार्टिसिपेट टुवर्ड्स द व्हाट लर्निंग. इट इज सुटेबल फॉर व्हाट बिगिनर्स. ये जो लर्निंग में बिगिनर है उनको बहुत ही सुटेबल है. New or difficult topics can be introduced easily because the students start from known to concrete example. known जो चीज उनको मालूम है उससे यहाँ पर teaching begin होती है. New difficult topics can be understood easily because students start from the what known to known concrete example. known यानी कि जो चीज हमें मालूम है, जो concrete जो हमें दिखाई देती है, उससे हम start करने से difficult concept भी क्या हो जाता है, easy हो जाता है. It reduces the rote memorization power. यानी कि मेमोराइजेशन यानी कि रट्टा मारना इससे कम हो जाता है. इंडक्टिव मेथड हेल्प्स द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाई नॉट जस्ट व्हाट, व्हाई नॉट जस्ट व्हाट करके. यानी कि स्टूडेंट विल रिड्यूस द व्हाट मेमोराइजेशन स्किल. यहाँ पर मेमोराइजेशन क्या होता है, कम हो जाता है. बच्चे खुद कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करके सीखते हैं. डीमेरिट्स, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड एंड लेबोरियस एंड लेंदी मेथड. टाइम कंज्यूमिंग क्यों बोलते हैं, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम द टीचर साइड, टेकिंग मेनी एग्जाम्पल, conducting the activities and guiding the observation takes more time than giving the formula directly. अगर तुम फॉर्मूला बोलो a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², बच्चे इजीली क्या है नहीं, फॉर्मूले को यूज करके स्क्वायर नंबर मालूम करते हैं. अगर यही फॉर्मूला बताने से पहले अगर टीचर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ले ले, नंबर ऑफ एग्जाम्पल, ये 5-6 एग्जाम्पल्स बतला के बाद में फॉर्मूला बोले, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा करते हैं. इसे 12 स्क्वायर करना है मुझे. ब्रेक द नंबर 2² इज व्हाट 4, 1 × 2, 2 का डबल कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर 1. नेक्स्ट उसके बाद में 28 का स्क्वायर करना है, समझो 8 का स्क्वायर 64 होगा, तो 4 लिखेंगे, 6 कैरी फॉरवर्ड, 2 8 जा 16, 16 का डबल 32, 32 + 6 इज व्हाट 38. yes 38. a + 6 ऐड करें तो फर्स्ट अगेन 3 कैरी फॉरवर्ड, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 3 इज व्हाट 7, 784. 8 का स्क्वायर 64 आएगा, तो पहले हम 64 को ऐसा लिखते हैं,
तो 6 खाली 4 यूनिट डिजिट लिखते हैं, प्लस 6 कैरी फॉरवर्ड, देन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर 2 8 जा 16, 16 का डबल 32, 32 में ये 6 को मिलाया जाता है यानी कि 38, ये 3 होगा यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड। अगेन 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 प्लस 3 इज व्हाट 7। सो ऐसा हमें 5 या 10 एग्जाम्पल करने के बाद में, 5 या 10 मिनिमम मैक्सिमम 5 एग्जाम्पल करने के बाद में जब हम उनको फॉर्मूला बोलते हैं तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक टाइम। सो इट इज व्हाट टाइम कंज्यूमिंग मेथड वी कैन से। ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। यस तो डायरेक्टली अगर फॉर्मूला बोल दे तो हम डिडक्टिव मेथड बोलते हैं इसको। सो डायरेक्ट फॉर्मूला बोलना है, जस्ट एग्जांपल बोलना है, पहले ही कॉन्सेप्ट टीच करके एग्जांपल दे तो डिडक्टिव मेथड, अगर पहले एग्जांपल्स देकर देन कॉन्सेप्ट को टीच करे तो इंडक्टिव मेथड होगा। नॉट सुइटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स, सेकंड डिसएडवांटेज क्या है इसका, डीमेरिट क्या है, नॉट सुइटेबल for all topics. Some topics in mathematics, example large formulas, complex theorems, trigonometric identities, are difficult to derive inductively. See here, so this method is not suitable for all the mathematical chapters, only it is suitable for what some of the topics. So we cannot adopt this method. इस method को लेकर हम मैथ्स के पूरे कॉन्सेप्ट को टीच नहीं कर सकते। yes, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिराइव इंडक्टिवली। नेक्स्ट आता है यहाँ पर रिक्वायर्स अ ट्रेनर टीचर्स। सो इसे दिस टू अडॉप्ट दिस मेथड, ये मेथड को अगर यूज करना है तो इफ द टीचर इज नॉट स्किल्ड, अगर टीचर के पास ही स्किल है इन सेलेक्टिंग द करेक्ट एग्जाम्पल्स, बट टीचर के पास अच्छी स्किल और अच्छी नॉलेज है तो ही कैन सेलेक्ट द एग्जाम्पल करेक्ट एग्जाम्पल्स, देन द मेथड इज वेरी इजी। अदरवाइज इफ द टीचर इज फ्रेशर इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, जैसे कि आफ्टर द बीएड कंप्लीशन, आफ्टर एमएससी के कंप्लीट होने जो शुरुआत में टीच करने जाते हैं, दे आर नॉट स्किल्ड, यस they will not select and correct examples, then the method becomes the what confusing to the what student and as well as teacher। बच्चों को भी confusing होगा, टीचर को भी confuse होगा। student may reach incorrect generalization, तो नेक्स्ट क्या होगा, इफ द एग्जाम्पल्स आर नॉट अप्रोप्रिएट स्टूडेंट में फ्रॉम द रॉन्ग रूल और मिसकंसेप्शन विल ऑकर। अगर अच्छे एग्जाम्पल्स करेक्ट और रिलेटेड नहीं रहे तो दे विल फॉर्म द व्हाट रॉन्ग अजम्पशन, रॉन्ग रूल एंड मिसकंसेप्शन स्टार्ट होगा बच्चों में। फिफ्थ वन, नीड्स मोर क्लासरूम रिसोर्सेस, इट नीड्स व्हाट मोर क्लासरूम रिसोर्सेस। एक्टिविटीज लाइक अगर हमको मेजरमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, मॉडल और चार्ट be required, so that is not possible in the what school, especially in the government school। गवर्नमेंट स्कूल में इतनी फैसिलिटीज नहीं रहती, एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट प्राइवेट स्कूल में होती है बट टीचर उसको यूटिलाइज नहीं करते मैक्सिमम। नॉट इफेक्टिव फॉर लार्ज क्लासेस, नेक्स्ट डीमेरिट जो है, इट इज नॉट इफेक्टिव फॉर लार्ज क्लासेस, गाइडिंग एवरी स्टूडेंट बिकम्स डिफिकल्ट इन लार्ज क्लासरूम। अगर लार्ज फॉर एग्जांपल एक मान लो एक क्लास में मोर देन 80 स्ट्रेंथ या 600 स्ट्रेंथ होती है, बड़े बड़े कॉलेजेस में होती है, जैसे कि पीयू कॉलेज के अंदर स्ट्रेंथ ओवरबर्डन रहती है, वहां पर इट इज व्हाट वेरी डिफिकल्ट। समटाइम्स लैक ऑफ सिस्टमेटिक प्रोग्रेशन, टू मेनी एग्जाम्पल्स कैन मेक द लेसन फील लेंथी एंड अंडर स्ट्रक्चर। अगर ज्यादातर एग्जाम्पल्स लेकर हम पढ़ाने लगे तो इट विल बी व्हाट स्टूडेंट विल फील लेसन इज वेरी लेंथी एंड अनस्ट्रक्चर, दे विल नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट टुवर्ड द लर्निंग। बच्चे क्या समझते हैं, लेंथी है और अनस्ट्रक्चर्ड है पूरा, तो दे विल गेट बोर, they will feel what very bored and unstructured, they will be get demotivated towards the what learning। 8, cannot work well under the exam pressure, when the syllabus is vast and time is limited। See here, when the syllabus is vast and time is limited, full inductive method may not be practical here। अगर time short है, syllabus lengthy है, तो we cannot adopt this method to teach, so better we go to the what shift to the what inductive, the what deductive method। Deductive method is a very best method to complete the syllabus within a time, because we will start directly with the concept and formulas। Yes, conclusion, after understanding all the points and examples of a inductive method, inductive method is a what child-centered method। Remember for your the point of your TET exam, which method is child-centered means what, inductive method is child-centered and activity-based method। Here the learner or the student move from specific example to general principle। Here the learner move from what, specific example to general principle। It helps the student actively discover the rule, concepts and relationship on their own। ये क्या है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल और जनरल रूल से जब हम स्टूडेंट यानी कि बच्चा जब प्रोसीड करता है सीखना, तो दे विल it helps the student actively to discover the rule or formula or concept and relationship on their own effort, making learning more meaningful,
long lasting. This method develops logical thinking, observation, reasoning, and problem solving skills. Remember these points. It develops the logical thinking, observation skill, reasoning skill, and problem solving skill among the student. It also increase the student participation because they learn through the what experiment, एक्टिविटीज एंड रियल लाइफ सिचुएशन, यानी कि बच्चों का पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज होता है सीखने के लिए. ओवरऑल वी कैन से दैट द इंडेक्टिव मेथड स्ट्रेंथेंस द कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन. इससे बच्चों में क्या होता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होता है. एनकरेज द व्हाट सेल्फ लर्निंग, बच्चों में सेल्फ लर्निंग को एनकरेज करता है, प्रमोट करता है. एंड बिल्ड्स द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स आइडियाज. इट बिल्ड्स द व्हाट स्ट्रॉन्ग बेसिक फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द difficult ideas or difficult concept we can say. Therefore it is considered an effective and scientific approach for teaching mathematics and science and language, especially in modern classroom. So this is all about the what inductive and deductive method.